Very good morning, kids. Welcome to SRV Academy. Today I am going to teach you subject science of class 6. This is my first chapter and the part 1 of this chapter. Your first chapter is totally based on food. Where does it come from? खाना और ये कहाँ से आता है? So look on your first paragraph. What did eat at home today? आज आपने अपने घर में क्या खाया? Find out what your friend ate today. आपकी दोस्त ने क्या खाना खाया इसका अभी आप पता लगाइए. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kinds of food at different times, isn't it? In this paragraph here, I just want to explain you कि what did you eat today? आज आपने अपने घर में क्या खाना खाया? What your friends eat today? आपके दोस्त ने क्या खाना खाया? और what you ate yesterday? What your friend ate yesterday? You just find out about these things. Have you taken the same kinds of food today or yesterday? No, because there are so much varieties of food present in our world, so that's why we have taken different kinds of food at different time. In our lunch, in our breakfast, in our dinner, we just take different kinds of food. Now come on, next paragraph, that is food variety. What do you understand by the food variety? So in this paragraph here, activity 1 is here. So what you have to do in this activity? Ask your friends in the school about the items they would be eating during a day. You have to ask your friend that what they have eaten in whole day. एक पूरे दिन में उन्होंने क्या खाया वो आपको अपने फ्रेंड से पूछना है. See if can also get this information from friends staying in different state of India. If you have friends in different state of India, अगर अलग अलग states में भी इंडिया में आपके friends हैं, you will also ask them what they have taken in during a day, because in different states different varieties of foods are there, and each and every states have their specialty of the food. That's why you just ask to your friends, if you have friends in other state, that what they have taken in whole day. List all the items in your notebook as given in table 1.1 as many friends as possible. Then what you have to do? Make a list how many friends you have, then make a list of your friends or your students and write food items eaten in a day. और food items आपको mention करने हैं एक दिन में उन्होंने क्या क्या food items खाए हैं. So look here, table 1.1, what do we eat? So you just have to make this activity number 1 on your notebook and you have to mention the name of your friend or student and food item eaten in a day. और क्या क्या food item उन्होंने एक दिन में खाए हैं, that you have to mention. Now come on the next paragraph. There seems to be so much variety in the food that we eat. खाने की बहुत सी वैरायटी होती है जो हम खाते हैं. Yes, is that it is correct. We never take a one type of food every time. We just take different kinds of food in different time. So what are these food items made of? Actually ये जो different varieties होती हैं तो क्या वो सेम तरीके से बनी होती है? No, वो different तरीके से बनी होती हैं. यानी जो food items होते हैं वो हर एक food items किस तरीके से बना होता है, that we have to study here. Think about rice cooked at home. We take raw rice and boil it in water. Just 2 material or ingredients are needed to prepare a dish of boiled rice. Yes, if we are preparing the rice at home, so what we want, only 2 ingredients we want. One is rice and another one is water. We just boil the rice in the water and we just prepare rice at home. Only 2 ingredients we want for preparing the rice. But is it possible to prepare other things with only the 2 ingredients? No, it is not possible. If we are making vegetable curry, so for that we need vegetables, salts, oil, spices, so many things we want, but means we are using so many ingredients to making the vegetable curry. Like the same different food items if we want to make, so
in all the items different ingredients we are using. So here we just want to discuss with you that important thing कि food items whatever we are taking वो किन किन ingredients से मिलकर बने होते हैं, by which they made up by what ingredients we are using to make them food item, to make their food item. Okay, so on the other hand, some food items are made with many ingredients. I have explained already. To prepare vegetable curry, we need different kinds of vegetable, salts, spice, oil and so on. Yes, I have already explained you this thing कि vegetable curry बनाने के लिए हमको same ingredients नहीं चाहिए कि हम केवल बॉयल वाटर में वेजिटेबल्स को कुक कर दें. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. फॉर प्रिपेयरिंग द वेजिटेबल वी वांट spices, salt, oil, vegetables, everything. Okay, and for preparing the rice, only we have boil the raw rice in water, and we just prepare the rice. Okay, so in your activity number 2, what you have to do actually, choose some of item you listed in table 1.1. अब आपने 1.1 जो आपकी activity number 1 है, on that you have listed some item whatever your friends have taken in during a day or in their daily food. So you just have written some items over there. So you just take some items from there, वहाँ से कुछ items ले लो and try to find out what ingredients are used to prepare these. और आपको ये लिखना है आपको नेक्स्ट एक्टिविटी में. यू जस्ट हैव टू मेक वन टेबल कि व्हाट इंग्रेडिएंट्स वी आर यूजिंग टू प्रिपेयर दैट आइटम. वो आइटम बनाने में क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हम यूज़ कर रहे हैं. ठीक है, बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स एंड एल्डर्स एट होम. आप अपने फ्रेंड्स से भी डिस्कस कर सकते हो, अपने घर में बड़ों से भी डिस्कस कर सकते हो. लिस्ट दैम इन अ टेबल 1.2. Some examples are given here. Add some more items to this list. So here list is here, a table 1.2, food items and their ingredients. So what food items already they have given as an example, roti and chapati. Roti और chapati के लिए ingredients क्या use करेंगे हम, atom and water. Only 2 ingredients we want. For the dal pulses, water, salt, oil, ghee. क्या क्या हमको चाहिए दाल बनाने के लिए, पल्सेस भी चाहिए, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइस. मीन्स 5 or 6 ingredients we are using for preparing the dal. So like the same in your activity number 2, you just make a table 1.2. On that you just mention some food items and write the ingredients whatever you are using to prepare these food items. Okay, now come on your next page. What do we find? आपको क्या पता चलता है. ठीक है, what do we find? Do we find some ingredients common or different food items? Discuss in class. So where do these ingredients come from? अब आप जब when you just write all these food items and their ingredients, तो आपको पता चलेगा कि food items में, सारे food items में क्या इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं या कुछ इंग्रेडिएंट्स कॉमन होते हैं. यस, मोस्टली सॉल्ट हुआ, ऑयल हुआ, दे आर द कॉमन इंग्रेडिएंट्स व्हाट वी यूज टू मेकिंग द फूड आइटम. सो यू जस्ट हैव टू डिस्कस दीज थिंग्स इन योर क्लास विद योर फ्रेंड्स. ओके, नाउ कम ऑन योर नेक्स्ट पैराग्राफ एंड दैट इज फूड मटेरियल एंड सोर्सेज. नाउ हियर सेकेंड इज फूड मटेरियल एंड सोर्सेज. अब जो फूड मटेरियल्स होते हैं वो हमें कौन कौन से होते हैं और हमको कहाँ से मिलते हैं, उनके सोर्सेस क्या होते हैं. सो यू नो वेरी नाइसली. बिफोर गोइंग टू रीड दिस पैराग्राफ आई जस्ट वांट टू मेक यू क्लियर कि डेफिनेटली वी आर गेटिंग दीज फूड आइटम्स फ्रॉम द प्लांट्स और इधर फ्रॉम द एनिमल्स, है ना. जो प्लांट्स वाले आइटम्स होंगे लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, सीड्स, वी जस्ट गेट फ्रॉम द प्लांट्स. और जो मिल्क, एग और बीट होगा, मीट, these items we just get from the animals. So here I think in this paragraph we just have to read about that. It may be easy for us the sources. It may be easy for us to guess the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2. हमने अपनी 1.2 टेबल में जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं फूड आइटम्स के, हम गैस कर सकते हैं कि वो हमको एक्चुअली में कहाँ से मिलते हैं. लाइक फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंटेंस, वेयर डू
वेयर डू दे कम, ठीक है, फूड्स और वेजिटेबल कम फ्रॉम प्लांट्स ऑफ कोर्स, कहाँ से मिलेंगे, प्लांट से. व्हाट आर द सोर्स ऑफ राइस और वीट, राइस और वीट का सोर्स क्या होंगे, यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड्स विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स. आपने हमेशा जो खेत मीन्स जो फार्म्स होते हैं वहाँ पर आपने देखा होगा वीट और राइस की छोटे छोटे पौधे रो में लगे रहते हैं. सो डेफिनेटली वीट एंड राइस ऑल्सो वी आर गेटिंग फ्रॉम द प्लांट्स विच गिव्स अस दीज ग्रेन्स. यस, हमको कहाँ से, छोटे छोटे प्लांट्स जो कि एक रो में लगे रहते हैं, फ्रॉम दैट वी जस्ट गेन राइस एंड वीट. And then there are food items like milk, egg, meat which comes from animals. Yes, जो milk है, eggs हैं, meat है, वो कहाँ से आते हैं, definitely from the animals. So in your activity number 3, let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from. अब हमने जो भी फूड आइटम्स आपके एक्टिविटी नंबर 2 में लिस्ट किए हैं, सो जस्ट टेक सम आइटम्स फ्रॉम दैट लिस्ट और फाइंड आउट करिए कि वो हमको कहाँ से मिलते हैं, फ्रॉम वेयर दे कम फ्रॉम, वो कहाँ से हमको मिलते हैं. आपको ये नेक्स्ट एक्टिविटी में लिस्ट करना है. द इंग्रेडिएंट्स एंड देयर सोर्सेज. Some examples are shown in table 1.3. Filling the blanks in table 1.3 and add more example. तो यहाँ पर उन्होंने आपको here they have given another table and that is 1.3 table. In this table, ingredient used prepare food items and their sources. आपको food items लिखना है, उसमें क्या ingredients हम use करते हैं, उनके sources क्या होते हैं, that you have to mention in this table. And this activity also you have to do on your notebook. So here food item they have given some example that like idli. So idli में ingredients we are using rice, urad dal, salt and water. So rice we are getting from the plants, urad dal also from the plants, salt from the sea, water is a natural source we are getting through the environment. Okay, so like the same you just have to keep so many food items on your table and write the ingredients whatever you are using to preparing that food item and sources from where they come. Okay, so just do this activity at your home and rest of the things we will discuss in our next video. And for the today you just have to complete all the activities on your notebook. And before going I just want to say you that you just subscribe this channel, because if you want to get more videos related to this chapter you just subscribe and like this channel. आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों और लाइक कर दीजिए चैनल को, तो आपके बुक से रिलेटेड आपके जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस होंगे फॉर नाउ एंड फॉर योर फ्यूचर आपको अवेलेबल हो जाएंगे. थैंक यू and have a nice day.